Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So, guys, as we were discussing about election, we discussed that election is a mechanism that enables people to elect their representative. मीन्स हमने पढ़ा कि इलेक्शन जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो अनेबल करता है एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकें. इज दैट क्लियर? नाउ आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्शन, एज द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्शन सिस्टम प्रेजेंट इन इंडिया. मीन्स इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट डेमोक्रेटिक इलेक्शन. लास्ट वन में हमने डिस्कस किया कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, अंडर विच we discussed the different features related with democratic election. Now here in this one we are going to discuss about the election system present in India. मतलब आज का जो वीडियो है वो एक नए क्वेश्चन के साथ शुरू होता है, that is what is our system of election. Okay, so question है how the representatives are elected in India. India में representatives का election कैसे होता है? So election offers three choices to people related with the representatives. Means ये तीन टाइप से अपने representatives कलेक्ट करते हैं. First, those who will make laws for them, those who will form the government, and those whose policy will play a very important role in guiding the decisions of the government. Okay, और इस पूरे फिनोमिना में हमें एक पॉइंट माइंड में रखना है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते हैं वो भी डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ इलेक्शंस होते हैं. उसमें भी कुछ वैसे ही फीचर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमने डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ इलेक्शन में डिस्कस किए थे. मतलब हमारे जो इलेक्शंस होते हैं उनमें भी वन वोट वन वैल्यू होती है. यहाँ पे समथिंग टू चूज़, यानी सारी पार्टी और जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए फ्री होते हैं. जो लोग या जो पीपल जिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को सपोर्ट करते हैं उसी का इलेक्शन होता है. ये सारे फीचर्स हमारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, रेगुलर इंटरवल्स के बाद में इलेक्शंस होते हैं. ओके, इन इंडिया वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ इलेक्शन. ओके, फर्स्ट वन इज द जनरल इलेक्शन and the next one is the by-elections. Okay, so guys, elections are organized for लोक सभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली. यानी हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं वो लोक सभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होते हैं. एंड इन दीज इलेक्शंस द total number of members in legislative assembly or in Lok Sabha are elected together. मतलब हम ये कह सकते हैं in legislative assembly or in Lok Sabha all the members get retirement together. Means the membership of all the members dissolve together. यानी लोक सभा या legislative assembly में members की membership जो होती है वो एक साथ dissolve होती है. यानी वो एक साथ ही अपनी मेंबरशिप गेन करते हैं और एक साथ ही अपनी मेंबरशिप छोड़ते हैं. सो इन दिस वे फॉर ऑल दीज मेंबर्स इलेक्शंस आर हेल्ड, इलेक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड. ओके, एंड दिस काइंड ऑफ इलेक्शन इज रेफर्ड एज जनरल इलेक्शन. यानी जनरल सिचुएशंस में सारे मेंबर्स के लिए ओके इलेक्शंस आर organized, or we can say that held. Elections are held for all the members. Therefore, electing all the members of Lok Sabha, all the members of Legislative Assembly, and this kind of elections are being referred as general elections. Okay, यानी ऐसे इलेक्शन जिसमें एक साथ सारे मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है
This kind of elections are referred as general election. Okay. Along with that, sometime in the situation of death or resignation for a particular member, election is organized in that particular region, that is called by-election. Okay. So election at a particular region is by-election. Okay. तो देखो इलेक्शन जनरली टू टाइप्स के होते हैं, जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन. ओके. यानी जब लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा में सारे मेंबर्स के लिए एक साथ इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, देन दिस काइंड ऑफ इलेक्शंस आर रेफर्ड एज जनरल इलेक्शन. ऐसे इलेक्शन जनरल इलेक्शंस होते हैं. ठीक है. इन द सेम मैनर व्हेन इलेक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन, इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर इन द सिचुएशन ऑफ डेथ एंड रेजिग्नेशन ऑफ अ पर्टिकुलर मेंबर, यानी पर्टिकुलर सीट को फिल करने के लिए इलेक्शन होगा तो बाई इलेक्शन है, और यदि सारी सीटों के लिए एक साथ इलेक्शन होते हैं तो जनरल इलेक्शन होते हैं. दीज आर द टू काइंड्स ऑफ इलेक्शंस ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया. ओके. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डील विथ जनरल इलेक्शन. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जनरल इलेक्शन प्रेजेंट इन इंडिया? सो गाइस, इन इंडिया फॉर इलेक्शन the whole country is divided into constituencies. Okay, electoral constituencies. Okay, यानी हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी का होता है. So guys, as we discussed that in legislative assembly election of Haryana, 90 members were elected. इसका मतलब the residents of Haryana state elected 90 members for legislative assembly. अब इसका ये मतलब तो कभी भी नहीं है कि सारे members जो सारे residents हैं उन्होंने टोटल 90 members के लिए वोट डाले हैं. Okay, actually they casted their vote for election of one member. यानी इसमें सिस्टम ये है कि हमारे यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम प्रेजेंट है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है. ओके, और वी कैन से दैट एरिया रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिसमें the whole country is divided into different constituencies. यानी हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे यहाँ जनरल इलेक्शंस होते हैं लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट लोकसभा, then for the election of Lok Sabha, the whole country is divided into different parliamentary constituencies. Okay, संसदात्मक निर्वाचन क्षेत्र, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो पूरे कंट्री को अलग अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है. एंड फ्रॉम ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वन मेंबर इज इलेक्टेड. ओके, यानी पूरी कंट्री को अलग अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है और हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्ट होता है. ओके, दिस सिस्टम इज प्रेजेंट इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा. यानी लोकसभा जनरल इलेक्शन में द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड फ्रॉम वन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वन मेंबर इज इलेक्टेड. एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक मेंबर इलेक्ट होता है. ओके, अलॉन्ग विद दैट, एज अ मेजर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, one vote, one value. Our constitution also tried to establish the parliamentary constituencies on the basis of equal population. Means we can say that the distribution of population in all these parliamentary constituencies is nearby equal. यानी लगभग एक दूसरे के बराबर है, ताकि एक पर्टिकुलर एमपी जो है, एक पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इक्वल शेयर ऑफ वोट को रिप्रेजेंट करे या फिर इक्वल शेयर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करे. यानी सिंपल सा पॉइंट है कि हमारे यहाँ इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो फॉर्मूला वो अप्लाई होता है, जिसमें
लोकसभा इलेक्शन में पूरी कंट्री को अलग अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है एंड फ्रॉम वन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वन मेंबर इज इलेक्टेड विच इज नोन एज एमपी, जिसको एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेफर किया जाता है। इन दिस वे देयर आर 543 elected members in Lok Sabha at present. So in this way we can say that for the election of Lok Sabha, the whole country is divided into 543 electoral constituency, parliamentary electoral constituency, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र. Is that clear? In the same manner, if we talk about state elections of state legislative assembly, then at that time the whole state is divided into different electoral constituencies. Okay, ये parliamentary electoral constituencies होती हैं, parliamentary constituencies होती हैं, वो legislative assembly constituencies होती हैं. Okay, so for the election of state, the whole state is divided into different legislative assembly constituencies. Okay, legislative assembly constituencies, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है पूरे स्टेट को. In this way, in one parliamentary constituency there can be many legislative assembly constituencies. यानी एक parliamentary constituencies में बहुत सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल सिक्कर इज द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी. ओके, और इस सिक्कर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 8 लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज प्रेजेंट है. तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है उसमें बहुत सारी लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज प्रेजेंट हो सकती हैं. इन द सेम मैनर इफ वी फर्दर डिस्कस दैट at local level, the village is divided into, means for gram panchayat elections the whole village is divided into different wards, and from each ward one member or one punch is elected. So as with the cities also. Okay, means for city local self government also the whole city is divided into different wards, and from one ward one member is elected. Is that clear? तो इसका मतलब ये हो कि हमारे यहाँ की जो इलेक्शन का सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंटेशन या एरिया रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला अप्लाई होता है. ओके, और इसमें लोकसभा इलेक्शन के लिए पूरी कंट्री को, असेंबली इलेक्शंस के लिए पूरे स्टेट को, और पंचायत इलेक्शन के लिए पूरे गांव को अलग अलग वार्ड्स में या अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है, और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से वन मेंबर इलेक्ट होता है, और जो लोग उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं वो उस पर्टिकुलर मेंबर को इलेक्ट करने के लिए वोट डालते हैं. इज दैट क्लियर? ओके, समटाइम these constituencies are referred as seats. Okay, in this way we can say that 60 seats scored by Lok Dal means the members of Lok Dal party, or we can say that the candidates of Lok Dal party got victory in 60 constituencies. Okay, and 60 constituencies में इनको जीत मिली है. Is that clear? So this is the formula of election present in India. Okay, तो ये हमारे यहाँ electoral constituencies का system present होता है, और इन electoral constituencies को seats भी रेफर करते हैं. ठीक है, जैसे इन राजस्थान we have 200 seats in legislative assembly. इसका सिंपल सा मीन है कि राजस्थान में
200 legislative assembly constituencies present हैं. In the same manner, in parliament there are 543 seats. In लोक सभा there are 543 seats. इसका सिंपल सा मतलब है कि लोकसभा इलेक्शंस के लिए पूरी कंट्री को 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है. ओके. Now after that, the next point is the system of reservation. Okay, means reservation of seats. So as we adopted the system of parliamentary constituencies means area representation. Okay, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिस्टम प्रेजेंट किया जिसके अकॉर्डिंग हर एक पर्टिकुलर एरिया से एक मेंबर इलेक्ट होता है. बट विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सिस्टम देयर वाज अ फियर इन द माइंड ऑफ आवर लीडर्स, और वी कैन से दैट इन द माइंड ऑफ आवर constitution framers, that the people related with backward classes, पिछड़ा section, okay, scheduled tribes, scheduled castes, other backward classes would not be able to give their proper representation in the parliament if they will be treated equally as per the higher sections of the society. मतलब our constitution provided the right to vote to every Indian citizen, means every Indian citizen is entitled to elect his representative in the same manner to be elected as a representative. यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर एक भारतीय नागरिक जो है वो कैपेबल है कि वो अपना वोट डाल करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है. इसके साथ साथ वो खुद एज अ रिप्रेजेंटेटिव चुना जा सकता है. इज दैट क्लियर? ओके. लेकिन जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको यदि बाकी सबके साथ में इक्वल समझ करके यदि इलेक्शन लड़ने दिया जाए देन दे वॉन्ट बी एबल टू कंटेस्ट द इलेक्शन एज दे आर हैविंग अ रिक्वायर्ड इनेजिबिलिटी, यानी उनके पास में इतना एलिजिबिलिटी नहीं है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें. सो द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स डिसाइडेड टू रिजर्व सम सीट्स, रिजर्व सम एरियाज फॉर द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज सेक्शंस. यानी ऐसे रीजन्स जिनमें SC ST यानी बैकवर्ड क्लासेस का मेजॉरिटी है, ऐसे एरियाज को रिजर्व कर दिया जाए इन क्लासेस के लिए, सो दैट द रिप्रेजेंटेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट. यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये मेंबर इलेक्ट नहीं होंगे, ये लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं चुने जाएंगे, और ऐसी सिचुएशन में एक बहुत बड़ा सेक्शन जो पॉपुलेशन का है उसका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, लोकसभा में नहीं होगा. सो फाइनली दे डिसाइडेड द formula of reservation under which seats in parliament are reserved for scheduled caste, अनुसूचित जाति and scheduled tribe, अनुसूचित जनजाति. ओके. इनके लिए लोकसभा में सीट्स रिजर्व की गई आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा. एट प्रेजेंट 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर SC scheduled caste and 47 seats are reserved for ST scheduled tribe. ओके. यानी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो लोकसभा में 84 सीट्स scheduled caste के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, and 47 seats are reserved for scheduled tribe, अनुसूचित जनजाति, on the basis of new election bill implemented from 26th January 2019. यानी सिचुएशन है 26 जनवरी 2019 तक की, जब SC के लिए 84 सीट्स और ST के लिए 47 सीट्स रिजर्व की गई हैं लोकसभा में. Is that clear? Okay. Now after that, the same formula of reservation is further extended to the local governance also. Means local governance में भी इस formula को अप्लाई किया गया है जिसके अकॉर्डिंग seats for SC
ST, along with that other backward, or we can say that OBC, other backward classes, OBC. Okay, seats are reserved in panchayat and municipal इलेक्शन, यानी सिटी लोकल लोकल गवर्नमेंट में, और वैसे ही जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसमें SC ST और OBC के लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं. अलॉन्ग विद दैट 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, यानी महिलाओं के लिए भी सीट्स रिजर्व की गई है. इज दैट क्लियर? सो इन दिस वे, under the system of election present in India, we discuss two major points. First one, electoral constituency, जिसका मतलब है कि पूरे कंट्री को लोकसभा इलेक्शंस के लिए अलग अलग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है, जहाँ पे उन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड जो लोग होते हैं वो वोट डालते हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, यही फॉर्मूला आगे चल के पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में अप्लाई होता है. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्वेशन का. इसका मतलब कि कुछ सीट्स जो हैं वो SC ST के लिए लोकसभा में रिजर्व है इन द सेम मैनर. दिस फॉर्मूला इज फर्दर एक्सटेंडेड फॉर द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑल्सो, जिसमें SC ST और OBC के लिए सीट्स रिजर्व है. अलॉन्ग विद दैट 1/3 सेक्शन इज रिजर्व फॉर women. Is that clear? Okay. So guys, about the remaining things of election system in India we'll discuss in the next one. So stay tuned for the next, and if there will be any doubt in your mind, write me in the comment section. I will definitely help you to resolve all your doubts. So guys, stay tuned for the next. Stay at your home. Be safe. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind. Jai Bharat.